14 MPs had been suspended last week also for demanding a statement on the security breach. So with this, the total number of MPs suspended in this session comes to 92. आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब तो एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे, तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो, लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें माननी होगा। चेयरमैन को पुनर्विचार करना चाहिए। अब मैं नहीं कहूँगा पुनर्विचार करने के लिए, अगर पुनर्विचार करते ही तो हमें सस्पेंड ही नहीं करते। कि इसमें जांच होना चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को समाप्त करने का ये षड्यंत्र तो नहीं है। ये सारी बातें चर्चा आनी चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी, अरे प्रधानमंत्री जी ना आए, अमित शाह जी तो आए, इन्हें प्रेस में जाके अपने बयान देने की ज़रूरत है। समय है, हमें सदन में जब देने की ज़रूरत नहीं है। आखिर हम उसके जवाबदार नहीं है क्या? तो ये तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए और अपना षड्यंत्र बचाने के लिए वे 92 लोगों को सस्पेंड कर चुके हैं। आज हम सब और होंगे सस्पेंड। लगातार इनका जो रवैया है वो बढ़ते ही जा रहा है, एरोगेंसी का, और जिस रूप में ये व्यवहार कर रहे विपक्ष से वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ये कोई दुश्मनी का खेल नहीं है। राजनीति में, लोकतंत्र में लड़ी विचारधारा की है। आपके क्या सिद्धांत हैं, क्या पब्लिक के लिए आप प्रोग्राम देना चाहते हैं। हमारी पक्ष विपक्ष की लड़ाई होनी चाहिए। उसको लेके आप धरने दो, प्रदर्शन करो हाउस के अंदर बाहर, ये सब कुछ जायज़ है। अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने कहा जब वो धरने दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, 12-12 दिन तक हाउस नहीं चला है। उस वक्त में 12-12 दिन तक पर निकाले नहीं जाते थे इस प्रकार से थोक के अंदर। The Prime Minister, during his interaction with BJP MPs during the parliamentary party meet, said that it is unfortunate that it seems like the opposition is backing those who breach parliament security. Taking a dig against the opposition, the Prime Minister told the BJP MPs that the current hall where they are holding meets will not be large enough for them after the next elections. आज कुछ लोग मिल रहे हैं दिल्ली में अलायंस के नाम पे, उनके बारे में भी, तो उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। और लेकिन हमारे जो, हम सब जो बैठे हैं, तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत का भविष्य उज्जवल बनाना, ये हमारा उज्जवल भविष्य का
ये हमारा सोच है। उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जिएंगे और काम करेंगे, ये हमारा सोच है। TMC MP Kullan Banerjee was seen mocking Vice President Dhankar at the sit-in protest at the Parliament. The Vice President expressed shock at the knowledge of the incident. The BJP has slammed the mocking of the Vice President and Chairman of the Rajya Sabha. I have been appointed here only to say Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall, I'm so tall. My spine is so straight. My spine is so इसको थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। Office of Chairman Rajya Sabha and Office of Speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. The fourth meeting of the Indian National Developmental Inclusive Alliance will take place at the Ashoka Hotel in New Delhi. The fourth meeting of the alliance partners was originally scheduled for December 6th, but had to be postponed following the unavailability of key leaders like Mamata Banerjee, Nitish Kumar and Akhilesh Yadav. The latest meeting of the bloc that has been called by the Congress shall be attended by Bihar Chief Minister Nitish Kumar, Bihar's Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin, Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal, RJD Supremo Lalu Prasad Yadav, and Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav. TMC Supremo and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is already in the national capital for the meeting and has advocated that the bloc's PM candidate be decided after the 2024 Lok Sabha polls. AAP national convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal met with Banerjee and Shiv Sena UBT President Uddhav Thackeray at his residence on the eve of the meeting. Reports suggest that Kejriwal shall attend the alliance meeting before heading to an undisclosed location to attend a 10-day Vipassana meditation course. इंडिया गठबंधन की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी अपनी सहयोगी बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री ममता दीदी से मिले थे और कल ही वे महाराष्ट्र के जननेता लोकप्रिय नेता उद्धव ठाकरे साहब से भी मिले और आज सुबह सुबह उन्होंने तमिलनाडु के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
स्टैलिन साहब से मुलाकात करी। इन मुलाकातों में मुख्य तौर पर कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत किया जाए, देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार चाहती है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चाहती है, एक विकल्प की तलाश में है, उस देश की जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए और कैसे इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए एक मजबूत सरकार दी जाए। इस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई और कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, कैसे और एकजुटता के साथ हम साथ आएं, इस विषय पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। मीटिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिस तरीके से तानाशाही रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया है। या तो वो हमें बता दें कि पार्लियामेंट की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम उसको सुरक्षा नहीं दे सकते और हमें ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। हम तानाशाही की तरीके से पीएमओ अब नया हेडक्वार्टर्स होगा जहां से सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा। इस तरीके से पावर का मिसयूज करना, जनता के बीच लेकर जाना जरूरी है। जनता को बताना जरूरी है कि आज ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है, कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कल आप सभी के साथ होगा। तानाशाही जब वो होती हैं, देश होते हैं, वो सिर्फ एक इंसान के हिसाब से चलते हैं और वही रवैया आज भारतवर्ष अपना रहा है। इसीलिए हमें इसकी लड़ाई लड़ना जरूरी है और इस बैठक में ये सारी बातें रखी जाएंगी। हर बात की चर्चा होगी कि कैसे एक मजबूत विकल्प बनकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाए। इंडिया अलायंस का मीटिंग मैंने भी बताया कि सीट शेयरिंग का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। 3 मीटिंग हो गए, फायदा कुछ नहीं निकला और 4-5 स्टेट को चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 4 महीना कोई बैठक करने में कोई सहायता नहीं किया। तो इसीलिए आज का बैठक बहुत फलदायक होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, बहुत आर्टिकुलेट होना चाहिए और आम जनता को विश्वास होना चाहिए कि इंडिया अलायंस कैन फाइट बीजेपी in a proper manner and in a very positive manner and can defeat them in the 2024 election. आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है और जनता उसको देखती है। जो वर्तमान संसद में हुआ, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की। संसद चर्चा का विषय है। कई गंभीर बिल जिसे देश के विकास का और रास्ता बढ़ेगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। तो उस हताशा की खींच को निकालने के लिए संसद में अवरोध पैदा किया जा रहा है। आज की बैठक में सलाह मशवरा होगी, विचार विमर्श होगा और जैसे मैंने कहा कि अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं, जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए। वो एक बात होगी और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे और सारे मैं भी मेरी बात कहूंगा, फिर देखते। Ayodhya is adorned with vibrancy, lights and decorations as it prepares for the Pran Pratishtha ceremony and the inauguration of the Ram temple. On the second day of Ram Vivah, the famous Janaki Mahal temple in Ayodhya witnessed the offering of 56 types of offerings to Lord Ram and all his 4 brothers, including Ram Kaleva. Ahead of the Ram Mandir inauguration, security in Ayodhya has been beefed up with the installation of CCTV cameras. अयोध्या हमेशा से संवेदनशील
क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग अपनी सुरक्षा ड्यूटियों को जो भूमिका देते हैं और उसके बाद उसकी सम्यक उसका अनुसरण करते रहते हैं। इसमें हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स की अपनी एक सिक्योरिटी स्कीम के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसमें विभिन्न तकनीकी आयामों का भी समावेश किया गया है और हमने इसमें फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी जगह जगह पर ऐड किया हुआ है और उस समेकित रूप से उद्देश्य ये है कि हम सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें और साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ एक बेहतर व्यवहार लोग फोर्स के लोग कर सकें, इसके आशय का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया है। सुरक्षा हम लोगों ने जो इसमें पूरी जो हमारी नई सिक्योरिटी प्लान है उसके तहत कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसे एक फैसिलिटेशन सेंटर है उसके तहत गुजरना होगा, सिक्योरिटी चेकअप्स हैं उसके तहत उसके जाना होगा। वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने जो पहले की तुलना में और अधिक विकसित तरीके से इसको की हुई है और हमारे जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। जो गवर्नमेंट की ड्रोन पॉलिसी है उसका हमने अक्षरशः अनुपालन यहाँ पर सुनिश्चित किया है। कोई भी बिना अनुमति के कोई ड्रोन इस एरिया में अगर उड़ते हैं तो उसमें हम जवाबदेही तय करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस को भी उस समय व्यवस्थापित रखा जाएगा ताकि हम उस पर प्रभावी कार्रवाई समय रहते कर सकें। रिवराइन सिक्योरिटी को भी हमने सुदृढ़ किया है और आगे के आने वाले समय में हम नदी तट के माध्यम से भी एक व्यापक सुरक्षा योजना हमारी तैयार है जिसका हम एक बेहतर अनुपालन कराएंगे और उसका अनुश्रवण भी हम इसको लगातार करते रहेंगे। 37 विभिन्न पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया है, कुछ शासकीय भूमि पर हैं, कुछ अशासकीय हैं। दोनों तरह के स्थितियों पर हम लोगों ने एक अपनी बेहतर तैयारी की हुई है। उन पर भी हम I.N.D.I.A कैमरे स्थापित रखेंगे। हम एक एडवांस सिस्टम भी विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं जिससे कि लखनऊ से चलने पर। Meanwhile, residents of Ayodhya have opened up their homes for homestays to host visitors for the upcoming grand consecration ceremony at the Ram Janmabhoomi temple. Currently, 500 homestays with 1800 rooms have already been registered. In Hyderabad, Hindu volunteers and devotees are going door to door and gave Akshantalu an invitation to devotees to visit Ayodhya Ram Janmabhoomi on the 22nd of January. Meanwhile, in a Surat-based diamond merchant crafted a magnificent necklace inspired by the theme of the Ram temple in Ayodhya. The intricately designed necklace features Sri Ram, Janaki, Lakshmana and Hanuman adorned with 5,000 American diamonds. The centerpiece of the design is a necklace depicting the Ram temple crafted from 3,000 American diamonds. The necklace, which weighs around 700 grams in total, also incorporates characters from the Ramayana, using 2 kilograms of silver in its creation. And in some other news, the Union government has advised all states to ensure that tighter public health measures are taken to minimize the transmission of COVID-19 virus. The advice comes following a rise in infections in some states, particularly in Kerala. The first case of a new subvariant of COVID-19, JN.1, was detected on 8th of December in the southern state, raising concerns about a resurgent health risk more than 2 years after India's last pandemic-related lockdown. The Union government has asked states to strictly comply with operational guidelines for surveillance of COVID-19 and ensure adequate testing in all the districts. Meanwhile, with rising concerns about the surge in COVID-19 cases, Government of Karnataka is on a high alert. Hospitals across the state conducted mock drills, and Health Minister Dinesh Gundurao is set to meet with the Technical Advisory Committee or TAC to assess the situation and prevent an increase in COVID cases. The Karnataka government too has made it mandatory for people above the age of 60 and those with comorbidities to wear masks in public places. The WHO has considered JN.1 to be a variant of interest so far. JN.1 has been detected in the United States of America, China, Singapore and now India.
Unprecedented heavy rainfall in Tamil Nadu's Tirunelveli district, triggered by cyclonic circulation, has claimed the lives of at least 4 people, including a woman, according to the district administration. The victims suffered fatal incidents like wall collapses and free falls due to incessant rains since Sunday. The town of Srivaikuntam, along with 50 nearby villages, is now cut off by floods, leaving thousands stranded. As roads leading to Srivaikuntam have been washed away, there is no power and internet connectivity there either. The NDRF is actively engaged in rescue operations in the inaccessible areas. Southern districts including Tirunelveli, Tenkasi, Thoothukudi and Kanyakumari are witnessing heavy rains since Sunday. This has led to major rivers overflowing and disrupted rail connectivity as well. Thoothukudi, for instance, has witnessed precipitation equivalent to its average rainfall in a single day. Indian Air Force helicopters are deployed for crucial rescue and relief operations, dropping food items and essential supplies to flood-stranded areas. A significant step has been taken in Jammu to address the issue of illegal settlement by Rohingyas. Jammu police scrutinized the identity and refugee cards issued by the UN High Commission, acting on information about illegal occupants. The police identified individuals with fake PAN and Aadhaar cards, leading to multiple cases being registered across Jammu's police stations. Ongoing police action includes a raid in the Rohingya colony, ensuring heightened security to maintain public order. जम्मू कश्मीर पुलिस सुबह से ही रोंगिया बस्ती में यहाँ पर रेड डाल रही है। इस समय हम रोंगिया बस्ती में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। ना सिर्फ महिला कांस्टेबल बल्कि जो यहाँ पर रोंगिया जो यहाँ पर जवान है, जो ऑफिसर है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हो। और यहाँ पर लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर रोंगियाओं से पूछताछ कर रही है कि आपको कितना वक्त इस इलाके में हुआ है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नफरी है वो यहाँ पर लगातार बढ़ाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस इलाके में ना बिगड़े। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरीके से यहाँ पर जो तैनात जो है वो यहाँ पर की गई है। और आपको बता दें कि 7 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पे पुलिस को कंप्लेंट मिली थी। दरअसल ये रेड इसलिए डाली गई है कि कहीं जिन लोगों ने यहाँ पर शेल्टर दिए हैं, जिन लोगों ने इनके फेक आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाए हैं और उन लोगों को लेकर यहाँ पर जो रेड है वो डाली गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तस्वीरों में भी साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ना सिर्फ जवान बल्कि जो ऑफिसर है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ पे जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। और तस्वीरों में भी साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग लोकेशंस पे जो रेड है वो यहाँ पर की गई है। ये रोंगिया बस्ती है जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, महिला कांस्टेबल्स को और जो ऑफिसर है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जब यहाँ पर जो रेड चल रही है उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े। President Abdel Fattah al-Sisi has won a third term with nearly 90% of votes in an election most Egyptians felt was a foregone conclusion. The former general's previous 2 terms were marked by a crackdown on political dissent. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi has won a third term in an election where he faced no serious challenges and garnered nearly 90% of votes. According to election authorities on Monday, Sisi called the result a rejection of the inhumane war in neighbouring Gaza. Some voters said the eruption of conflict in Gaza had encouraged them to vote for Sisi,
who presents himself as a bulwark of stability in a volatile region. That argument has also proved persuasive to Gulf and Western allies, who provide financial support to his government. Egyptians voted on December 10th to 12th. The state and tightly controlled domestic media pushed hard to boost turnout in the poll, which the election authority said had reached 66.8%, above the 41% recorded at the last presidential election in 2018. The election featured 3 other candidates, none of them high profile. The most prominent potential challenger halted his run in October, saying officials and thugs had targeted his supporters, accusations dismissed by the election authority. Many people in the Arab world's most populous country expressed indifference about the election, saying the result was a foregone conclusion. Reuters reporters witnessed voters being bussed into some polling stations and bags of food being handed out, while some voters said they were offered financial incentives. The state media body said any provision of money or goods in return for votes was a criminal offence. Sisi, a former general, has overseen a sweeping crackdown on dissent across the political spectrum since he led the overthrow of Egypt's first democratically elected leader, Mohamed Morsi of the Egyptian Brotherhood, in 2013. Republican frontrunner Donald Trump declared plans for the largest deportation in American history if re-elected in 2024. During a Reno rally, he labeled President Joe Biden a low IQ individual and the worst, most incompetent and most corrupt president in U.S. history. A day earlier, Trump in New Hampshire accused undocumented immigrants of poisoning the blood of our country using language criticized as xenophobic and echoing Nazi rhetoric. He emphasized this stance amid concerns about the record number of migrants attempting illegal U.S. border crossings. Given the unprecedented millions of Biden illegal aliens who are invading our country, it is only common sense that when I'm re-elected, we will begin, and we have no choice, the largest deportation operation in American history. We have no. Joe Biden and the Democrat Party are incapable of solving any problem. There's not a problem they've been able to solve. Crooked Joe is a low, you know this, did you ever hear this? Crooked Joe is a low IQ individual. And he is truly the worst, most incompetent, and most corrupt president in the history of our country. In fact, Jimmy Carter is very happy because he looks like that was a brilliant administration by comparison to what you have right now. Texas Governor Greg Abbott signed SB 4, a new law allowing state law enforcement to arrest individuals suspected of illegally crossing the U.S.-Mexico border, a power traditionally held by federal agencies. The law, effective in March, establishes a new state crime for illegal entry to Texas with penalties ranging from 180 days to 20 years in prison. Magistrate judges will mandate migrants to return to Mexico with potential 20-year sentences for non-compliance. Abbott also approved a $1.5 billion bill for border wall construction, in addition to the existing $5 billion in state funds allocated for border enforcement. Biden's deliberate inaction has left Texas to fend for itself. The authors of the United States Constitution foresaw a situation when the federal government would be inattentive to states that faced challenges at their borders. And in response, they inserted Article 1, Section 10 to the United States Constitution to empower states to take action to defend themselves. And that is exactly what Texas is doing. I will sign 3 laws today to better protect Texas and America from Biden's border neglect. The first is Senate Bill 4 from the 4th special session. The goal of Senate Bill 4 is to stop the tidal wave of illegal entry into Texas. It creates a criminal offense for illegal entry into Texas from a foreign nation.
I'm also signing Senate Bill 3 from the 4th special session. Senate Bill 3 adds $1.54 billion more to build more border barriers and walls like what we have here. It includes also $40 million for the Texas Department of Public Safety for border security operations and increased law enforcement presence. A news coming in from home, and it seems to be going on and on now. More than 40 MPs have been suspended today, taking the number of suspended MPs to 140. Dr. Farooq Abdullah, Dr. Shashi Tharoor, Manish Tiwari have been suspended for disrupting House proceedings. Opposition MPs, including NCP Sharad Pawar and Congress's Mallikarjun Kharge, staged a protest in front of the Gandhi statue in Parliament premises after the suspension of 92 MPs for the remainder of the ongoing winter session. Rahul Gandhi, meanwhile, also joined in the protest. Like I said, now overall the count is 140 MPs who have been suspended. Now 78 MPs from both Lok Sabha and Rajya Sabha were suspended earlier for staging protest, demanding a statement by Union Home Minister Amit Shah on the Parliament security breach issue last week. 14 MPs had been suspended last week also for demanding a statement on the security breach. So this takes the total number of MPs suspended in this session as per the latest count to 140. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है भारत के लोकतंत्र का। पूरे विपक्ष को निलंबित करके ऐसे कानून पारित किए जाएंगे जो भारत को एक पुलिस स्टेट में परिवर्तित कर देंगे, और यही इनकी मंशा थी और यही इनको करना था। And that's all we have in this news bulletin. Thank you for watching. Yes, the scale of the attack surprised us.